you'll need a periodic table to solve this. So let's do it. Give the name or symbol. So that means you can write the full name, or if you want, you can write the symbol. Both of them will be acceptable. There will be questions जहाँ में आप सिर्फ या symbol या नाम लिख सकते हैं. So you have to pay attention to these instructions that they give you. The element in group 3, which means K periodic table mein, it should be in the third column. Okay. And period 4, that means it's key row 4 only. So this number is for column and this number is for the row. The column tells me how many shells it has in the last shell, how many electrons it has in the last shell. And the period tells me how many total shells it has. So based on this, fourth row, third column, that's going to be gallium. So I can just write Ga. Okay. Or if you want, you can write the full name. Although I would suggest K sirf gallium symbol is good enough. An element in period 3 that is a good conductor. So good conductor means it's a metal, right? So period 3 में हमारे पास 3 metals हैं: sodium, magnesium, aluminum. So इन तीनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं. In fact, aluminum is the best in these. Why? Why is aluminum the best between sodium, magnesium, and aluminum? Does anybody know why? So let's go back to why metals conduct at all. Metals conduct electricity because they have valence electrons. And those valence electrons are free. They are delocalized. They are forming a sea of electrons. तो जितने ज़्यादा electrons होंगे, उतना ज़्यादा rich sea of electron बनेगा. So aluminum के पास 3 valence electron है. तो ये 3 देगा sea of electron बनाने के लिए. Sodium का 1 है, तो वो 1 देगा. So obviously जिसके ज़्यादा electrons, वो ज़्यादा conduct कर सकता है, बेहतर conduct कर सकता है. Okay, so that's how we know that aluminum is a better conductor. This also means कि metallic bonding क्या होती थी? Metallic bonding was कि forces of attraction between positive ion and sea of electron. तो aluminum में चूंकि sea of electron बहुत बड़ा है, there are 3 electrons from every atom. So obviously aluminum के metallic bonding बड़ी strong होगी. और जब वो strong होगी तो that clearly tells us कि उसका melting point भी इन तीनों में सबसे ज़्यादा होगा. So you see कि सिर्फ ग्रुप नंबर से या सिर्फ लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे हमें उसके बारे में कितना कुछ पता लग रहा है. All right, the element in group 7 that is the most reactive. Group 7 are halogens. They absorb electrons, they accept electrons, they reduce जब भी उनको रिएक्शन करना होता है. So कल हमने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा था कि डाउन द ग्रुप हमारे पास रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है. क्यों? क्योंकि a smaller atom attracts electron better. It is easier for a smaller atom to accept an electron. So that means in group 7 सबसे छोटा atom कौन सा है? Fluorine. तो सबसे ज़्यादा reactive होगा. So F. A common mistake is कि student ना FL लिख देते हैं. आपने F लिखना है. F उसका symbol है. The element in group 5 that is present in a molecule of ammonia. Molecule of ammonia का मतलब है कि आपको पहले तो ammonia का formula याद होना चाहिए. So that is NH3. So उसमें group 5 में से कौन सा है? Nitrogen. So we'll just say nitrogen. We will not write the full formula for ammonia. We simply had to write it for the element in group 5. जो इसमें होगा. Okay. So that's what we have to write. Okay. An element with an atom containing 8 electrons. Okay. Atom containing 8 electrons. Which atoms are these? Yeah. We can usually think of it कि ये तो non-metal, ये तो noble gases होंगे. But do all noble gases have 8 electrons in the last shell? There is one noble gas that has 2 only, helium. तो इसका मतलब है कि ये helium के अलावा कोई भी noble gas हो सकती है. So neon कह लें, argon कह लें, krypton कह लें. State 2 differences in physical properties of metal, potassium and iron. Physical properties होती क्या हैं? So there are 5 physical properties जिनके बारे में हमें बताना चाहिए. First one is melting point या density. इन दोनों को एक ही कंसिडर करेगा एग्जामिनर. अगर आप डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट को अलग-अलग लिखोगे तो वो 1 मार्क देगा आपको. Conduction as solid. That's the second one. Then third one is conduction as liquid or in aqueous solution. Fourth one, solubility. Does it dissolve better in water or does it dissolve better in organic solvents? And lastly, is it soft or hard? या ductile है या malleable है
All of these are also considered the same. So अगर आप ductile and malleable लिखते हैं, and then you say it's soft, it's all going to be considered just 1 point. So these 5 main physical properties are what the examiner is expecting us to answer from. So state 2 differences in physical properties. अच्छा, अब यहाँ पे a common mistake again that students give is कि वो बता देते हैं कि one possible answer, let me tell. Let's suppose मैं इसकी बात कर रहा हूँ, melting point and density की. So I might say कि potassium has low density, iron has high density. Now that's not entirely a difference. That's just कि density दोनों की है, किसी की ज्यादा है किसी की कम है, वो इतना ज्यादा बड़ा difference नहीं है. A better difference would be कि one conducts electricity and the other does not conduct electricity. अगर ऐसा होता, that is a much better difference if you were to give that answer. So let's see. Two difference in physical properties. So first of all, potassium group 1 है, so it is soft. So potassium is soft and iron is hard. Now here's the thing. Don't say iron is not, because we always have to give answers that are positive. कि ये वो करता है, ये वो है. We will never say कि ये वो नहीं है. उसका हमें कोई फायदा नहीं है बात करने का. We have to say कि this is what it does, this is what it has. State one difference in the chemical property of potassium and sorry, I also have to give another one. The other one I can say is that potassium has low melting point or density, low density, and iron has high melting point. State one difference in the chemical properties of potassium and iron. Chemical properties कौन सी होती हैं? So chemical properties are all properties that depend on electrons. So chemical properties can be color, they can be oxidation states, they can be whether it is used as catalyst. All of these are chemical properties. So state one difference in the chemical properties. So we can say that potassium, in fact, we can say that iron has colorful compounds while potassium has white solids or white compounds. The chemical property. I love this question. This is talking about Mendeleev. Mendeleev was the guy who made the periodic table. And this is one clipping from that periodic table. Now, let's look at this. What do you see? Compare this to the modern periodic table. What do you see? In the modern periodic table, are hydrogen and lithium in the same column, or beryllium, boron, carbon, nitrogen? ये सब एक column में है? No. What do उनमें क्या same है in the modern periodic table? They're all in the same period. Like, we don't see the properties right now from this diagram of the periodic table. We don't see the properties. What we do say is that in the modern periodic table, beryllium and magnesium are in the same group. Boron and aluminum are in the same group. Carbon and silicon are in the same group. But in this one, they're in the same row. Or modern wale mein, they're in the same column. So ये एक difference है. Similarly, let's look at the numbers here. 11, 12, 14, 16. और इसने क्या किया हुआ है? इसने उस ऑर्डर में चीजों को अरेंज किया हुआ है. 1, 7, 9.4, 11, 12, 14, 16. उसने उनको इस तरह से अरेंज किया हुआ है that they're increasing in mass. In the modern periodic table, do we write them in order of increasing mass? What is the order based on in the modern periodic table? Increasing AR? Number Proton of number. electrons. Number of protons. Shells. Proton Yes, protons. Electrons तो कम ज़्यादा हो सकते, but protons are the ones that define what the element is. So the modern periodic table arranges things on the basis of proton number or atomic number. That's another difference that we have. अच्छा, there is a whole एक group है modern periodic table में जो इसमें है ही नहीं. Which one? Noble gases. Noble gases. Very good, because it was very difficult to find them. उसके ज़माने में they did not have the technology to do it.
But it is so amazing that he gave us this periodic table and he predicted कि यहाँ पे कोई element X होगा which will behave in a manner as boron and aluminum, और कोई element Y होगा जो carbon और silicon की तरह का behave करेगा. He predicted it and that proved true. Within his lifetime, 4 elements were discovered. That's amazing. That's remarkable. Okay, let's look at the question. Mendeleev listed the elements in order of atomic masses. What determines the order in the modern periodic table? We just talked about it. Proton number. Protons. Yes, proton number of protons. Mendeleev predicted the properties of undiscovered element X. You will find element X in the table above. ठीक है, हमें नजर आ रहा है. Deduce which group in the modern periodic table element X belongs. जी देखें. This is group 2, not zinc though. But zinc has a similarity with group 2. Zinc positive 2 बनाता है. ये भी positive 2 बनाता है. Boron, aluminum, group 3. So element X भी हम group 3 में ही expect करेंगे. So we'll simply say it is number 3. Describe 2 other differences between his and the modern one. So again, we can say that no noble gas. Similarly, groups as rows. So that is good enough, I guess. और periods को भी आप बता सकते हैं कि period इसमें ऐसे वैसे period की उसने बात नहीं की हुई. आप कह सकते हो कि periods are in the column here, but they are in the rows in the modern periodic table. Iron, cobalt, and nickel have similar properties. State the name of the block of elements in the modern periodic table, which includes iron, cobalt, and nickel. So tell me, what block is it? Transition metals or transition elements. By the way, if you study physics, you should also know that iron, nickel, and cobalt are also magnetic elements. A student does a series of experiments in which a halogen is displaced from its ion. It's solved by the addition of another halogen. Now let's look at a few numbers. What is a halogen? Tell me, what is a halogen? It is group 7. Okay. What is salt? Ionic compounds. What is displacement? बताएं. What is displacement? Shortest distance. I'm sorry? What is displacement? Displacement is when a more reactive element displaces a less reactive ion. Okay? A more reactive element displaces a less reactive ion. Okay, so let's see. In the halogens, they want to gain electrons, right? So a smaller atom is better, a bigger atom is not so good. Down the group, the size increases in all metals. So fluorine सबसे ऊपर है, iodine नीचे है. Yeah, astatine भी है, but खैर, let's talk about iodine. The size is getting bigger. So this is more reactive. It is able to attract electron more. This is able to attract electron less. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस ऑर्डर में है, तो क्लोरीन ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव है. सो ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को मिल सकता है. क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के पास नहीं जा सकता. Which means bromine cannot displace Cl here. So this is not going to be produced. Bromine is more reactive than iodine. It's a smaller atom. Jaldi electron gain karega. So this is true. Same for this one. Smaller atom है chlorine and much smaller atom है chlorine. So this is true. Give the electronic configuration for calcium. Configuration 20 proton numbers हैं. So 20 ही electron होंगे. Why? Because the overall charge is 0. Protons are positive, electrons are negative. देखें, we cannot directly say that protons are equal to electrons. There must be reason for that. So examiner आपसे अगर पूछता भी है, so you should know that protons are positive, electrons are negative.
and the overall charge is neutral, so they cancel each other out. And based on that, we know कि अच्छा इसमें 20 electrons है. Now, 20 electrons का मतलब क्या हुआ? That you have first shell में 2, second 8, third 8 again, and fourth 2. Clear? Now, look in the periodic table. Tell me, how do you know from the periodic table कि इसके last shell में 2 electrons होंगे? What is there in the periodic table जिससे हमें ये पता लगा? It is in period 2. Group 2. The column top to bottom, that is group. So it's in group 2. And yeah, that is how we know. Okay, how do we know it has 4 shells? Period 4. Period 4, very good. So there are 4 rows जिनमें ये calcium आता है हमें, and that is how we know it has 4 shells. Shabash. Okay. Calcium has 6 naturally occurring isotopes. State the meaning of the term isotope. So what is an isotope? Go on, guys. An element with same proton with different neutrons. Excellent. Do we have to say element? Can we say atom? Yes. Yeah, we should say that. Let me tell you why. Element का मतलब ये होता है कि उसमें same proton numbers हैं. So saying के same element and then saying same protons, kind of redundant. एक ही बात हम दो दफा से कर रहे हैं. So we'll simply use one of them. So we can say that atoms of same element. Or if you don't want to say that, then same proton number. You can also say same atomic number. इन तीनों से कोई भी एक बात कर दें. But different mass, atomic mass, or number of neutrons. Okay, so that's how we can say it. All right. Now, calcium, they have already told us it has proton number 20. And we know that isotopes all have the same proton number, which means that this will be 20 and that will also be 20. And since both of these are neutral, in दोनों में कोई charge नहीं है, we will have the same number of electrons. Why? Protons are positive, electrons are negative, they cancel each other out. The number of neutrons, mass minus protons. So 42 minus 20, 22, 48 minus 20, 28. Easy enough. Okay. Now, what do we do in this case? हमें table दे दिया उसने. If you ever have a table in which you have the value at the top, the value at the bottom, and the middle one is missing, then you can take the average of these two. So you just add them up. This will come out to be 4.92 divided by 2. So I get 3.46. And that is my average. But in this case, where I don't have the value at the bottom, I will have to see कि इनमें difference कितना है. So इसमें तकरीबन 20 का difference है, इसमें तकरीबन I don't know 60 का difference है, इसमें again 30 का difference है. तो कोई difference बता दें जो 30 और 60 के बीच का हो. So I might just add it by 40 more points. So I might say कि अच्छा minus 112. Now notice that I added it, but I still got a negative answer. But this does not take away from the fact that these are all getting warmer and warmer. They are all getting higher boiling points. Okay? So you should be able to identify कि ये boiling point इनके ज़्यादा हो रहे हैं. Boiling point क्यों ज़्यादा हो रहे होंगे? Every time melting and boiling point increase, you have to talk about forces of attraction. So इनमें intermolecular, can we say intermolecular forces? Look at these. Can we say intermolecular forces? Yes. All right. So boiling point of xenon. We clearly know that we can give a value that's higher. Lekin, my question is it okay to say intermolecular forces are increasing? Yes. Turns out we can't say that. There's a reason. हमारे पास है noble gases. Noble gases के molecules ही नहीं होते.
तो हम मॉलिक्यूल्स की बात ही नहीं कर सकते. But what we can say is they have stronger forces of attraction. Or we can say they have stronger van der Waals forces. अच्छा, in case you are not sure कि ये कहाँ से आया, all I did was, sorry ये 3.46 होना चाहिए, 2.46 होना चाहिए. All I did was मैंने इन दोनों को add किया है and then I divided it by 2 because मुझे इन दोनों की average चाहिए थी. Okay, so that's how I got 2.46. Argon is a gas at room temperature. Describe the arrangement and motion. So what's the arrangement in a gas? There is no fixed arrangement. So you can say no fixed arrangement, or you can say a better answer would be they're free. If you said random तो हर state में होता है. So motion भी आपने कहना है they are free to move around. Okay. Random आपने लिखना है तो लिख लें free and random. But random is going to be true for liquids as well. But liquid में वो free नहीं होता. They are sliding motion. State one use of argon. Come on. Argon के 3 uses मैंने आपको बताए थे. 2 uses, sorry. What are those? Argon is used in making light bulbs. Shabash. And argon is used in manufacturing steel. Shabash. Yes, very good. Over here, when you say motion, you have to describe the motion, they are saying. तो हम उसमें रीजन नहीं बता सकते. हम उसमें ये नहीं कह सकते कि उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है. बिकॉज वो तो उसकी रीजन में आ जाएगी ना कि वो क्यों तेज है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है. तो अगर हमें रीजन देनी हो तो यूजुअली एग्जामिनर कहता है एक्सप्लेन. यहाँ पे वो कह रहे हैं डिस्क्राइब, तो आपने रीजन नहीं बतानी. सो आर्गन के यूजेस हमें पता लग गए. नोबल गैसेस आर अनरिएक्टिव. एक्सप्लेन व्हाई. Now let's say a student says they have 8 electrons in the last shell. Has the student given the right answer? No. Yes. No. Because helium के पास तो 2 electrons होते हैं last shell में. है ना? So what should we say? We should say that क्यों नहीं react करते? क्योंकि उसके पास full shell होता है. They have a full shell. Now if you say they're inert, inert is just another word for unreactive. So yes, they are inert, but that doesn't give the reason. Notice उसने explain बोला है, तो explain का मतलब है कि reason बताओ, electron level पे जाके बताओ कि क्या हो रहा है. So yes, Unes, you're absolutely right that they have outer shell that is complete. Again, we cannot say that they have octet shell because octet का भी मतलब यही होगा कि उसमें 8 हैं और helium में तो 8 नहीं होते. So we'll say that they have complete outer shell. And that is the reason they don't hurt. That is the reason वो bonding नहीं करते. That is the reason वो reactive है. That is the reason they don't share electron. That is the reason they don't transfer electron. इन सब को वो question आपसे पूछ सकता है. But उसके पीछे reason एक ही है. That they have a complete outer shell. Copper is a transition element. Name 2 transition elements or compounds which are used as catalysts. Now, there's a list of this in the notes that I shared with you the other day. Make sure that you go through that file multiple times every week ताकि आपको वो चीजें पूरी तरह से याद हो जाएं. Okay? It is super important that you do. The first assessment objective that Cambridge has in the syllabus is knowledge with understanding. और वो knowledge में recall का एक बहुत बड़ा portion है. So you need to be able to remember these facts. हमारे पास 7 के 8 different catalysts हैं जो हमारे syllabus में. 4 of them are transition elements. So make sure that you go through those. Other than acting as catalyst, state 2 properties which are specific to transition elements. That means कि general नहीं, इनकी बात बतानी है. So properties that are specific to transition elements, they have colorful compounds which other metals don't. Sorry, colorful compounds. Similarly, they have variable oxidation states. Again, देखो reason एक ही है. उनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं. इसी की वजह से तो वो कलरफुल होता है, इसकी वजह से ही तो वो कैटलिस्ट होता है. तो रीजन ये है, लेकिन हम यहाँ पे बता रहे हैं. ठीक है.
Sodium is a metal in group 1. Diamond is a non-metal, which is a good conductor of heat. That's a very interesting thing. मतलब diamond बहुत unique properties का हामिल है. State two differences in the physical properties of sodium and diamond. Again, physical properties मैंने आपको 5 बताई हैं. Melting point or density. So we can say that sodium has low density, diamond has high density. Right? Clear difference नजर आ रहा है. अच्छा. Reaction with water, yeah, dissolving in water. Sodium reacts with water, dissolves in it. Diamond doesn't. Sodium can conduct electricity, diamond cannot as solids. ठीक है? Sodium has low melting point, diamond has high melting point. Very high, in fact. So all of these are differences there. This question is actually from atomic structure. Same for C, same for D. Sorry, C भी ये सारा. C2 हम देख लेते हैं. So this is nitrogen molecule. So what you need to remember is that nitrogen has N2. What do we call these things? Diatomic. Diatomic, shabash. Unais's question is that will hardness count? Yes, hardness, softness, malleability, ductility, all of that is one property that you can discuss. Okay, so we have two atoms, so I'll just draw two shells, two circles. Okay, center में मैंने nitrogen लिख देना. Don't circle nitrogen. Just write N. That's good enough. Now, nitrogen is in group 5. That means it needs 3 more. So हम 3 share करवाएंगे इससे. अच्छा, आप उनको ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन अगर किसी को ऐसे करते हैं कि उसने यहाँ पे लिखना है, sure, लिख लें, कोई इशू नहीं है. मतलब आप इसको यहाँ पे रख दें, कोई मसला नहीं है. ठीक है? Similarly, अब नाइट्रोजन के पास 5 थे, 3 shared हो गए. So 2 leftovers. There you go. So nitrogen molecule there. So it's a triple covalent bond. And that triple bond is why nitrogen is so unreactive. Okay, try to tell me what this answer would be. I've told you how to do it. Average. Average, shabash. So you just add them up, divide them by 2. Okay, so you'll just take the average. Has anybody calculated? Yeah, 7.76. So I can just say 7.76. So just why it is difficult to predict the melting point of arsenic. Let's see. बहुत ज़्यादा increase किया है, बहुत ज़्यादा increase किया है, और फिर गिर गया. ये क्या बात हुई? There's no fixed trend. Sir, I have a question. Yeah, go on. What if they ask that predict the melting point of whatever that's written there? So, like, are we going to take out the average? So thing is, the only way that we have is by taking out the average. But we are not confident कि हमारा जो आंसर आएगा वो ठीक है, क्योंकि उसमें कोई ट्रेंड है ही नहीं. अगर ट्रेंड होता ना, मतलब यहाँ पे देखो इंक्रीज हुआ है, फिर इंक्रीज हुआ है, फिर इंक्रीज हुआ है, फिर इंक्रीज हुआ है, हमें नजर आ रहा है कि देयर इज अ यूनिफॉर्म ट्रेंड. हियर देयर इज नो फिक्स ट्रेंड. सो हमें नहीं पता, हम अपनी तरफ से प्रिडिक्ट कर लेंगे, वो हो सकता है ठीक हो सकता है ना हो, हमें कॉन्फिडेंस नहीं है उसके ऊपर. Okay. Structure of two compounds of phosphorus R and S are shown. Okay. Explain in terms of structure and bonding. So let's talk about it. मुझे बताइए, what is the structure of R? It is ionic lattice. What is the bonding? It is Strong ionic. forces of attraction. वो तो हर bonding में होती है. Every bonding has strong force of attraction. But we need to specify what bonding it is. So it is ionic bonding, या आप लिख सकते हो strong force of attraction between ions, opposite ions. ठीक है? So you have to be more specific. Now on this side, what is the structure? It is molecular structure. What is the bonding? Covalent bonding. But यहाँ पे एक problem है. Covalent bonding का इसके melting point से कोई ताल्लुक नहीं है. Because this covalent bond does not break when melting. इसकी तो किसी और मॉलिक्यूल के साथ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने इंटरमोलिकुलर फोर्स ने टूटना है. सो यहां पे हम इंटरमोलिकुलर फोर्स का नाम लेंगे.
सो एग्जामिनर ने हमें बॉन्डिंग बोल दिया, बट फोर्स इज पार्ट ऑफ दैट, फोर्स हेयर इज पार्ट ऑफ दैट, सो हम उसकी बात जरूर करेंगे. सो इन आर वी कैन से that it has the ions are strongly held in an ionic lattice with strong force of attraction, so you need high energy to break it. 2 marks हो गए. मैंने स्ट्रक्चर की भी बात कर ली, मैंने बॉन्डिंग की भी बात कर ली. Compound S, it has a molecular structure with covalent bonding and there's weak intermolecular force of attraction which needs low energy to break. So हमने आंसर बता दिया. Covalent bonding in fact आप बात करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, because intermolecular force is the one that's important here. All right, explain why compound R conducts electricity when molten. So this thing, obviously the lattice breaks down when it melts, right? So now the ions are going to be free and that is why they conduct electricity. So free ions. Now here's the thing. दो mistakes जो बच्चे यहाँ पे करते हैं. पहली बात, वो ions की जगह electrons लिख देते हैं. स्ट्रक्चर को देखें, इस स्ट्रक्चर में कहीं पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं? नहीं है ना. दैट मीन्स हम वो नहीं बात कर सकते. फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं इसके पास, इसके पास आयंस है. ठीक है. दूसरी एक और मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, मोल्टन लिखा हुआ है, बट ऑब्वियसली उसमें हमारा टीचर्स का भी एक रोल है कि हम लोग जब भी पढ़ाते हैं ना, तो हम मोल्टन और एक्वस दोनों को इकट्ठा कंबाइन करके पढ़ाते हैं. सो मेनी टाइम्स व्हेन स्टूडेंट आंसर दिस, वो कह देते हैं कि फ्री आयंस इन द एक्वस स्टेट और विद मोल्टन स्टेट. उसने ऐसी कोई बात नहीं की है, तो हम नहीं अपनी तरफ से नहीं लिखेंगे. ओके, सो दीज आर मोल्टन. तो उसने हमने भी कहना है इट हैज फ्री आयंस व्हेन मोल्टन. ड्रॉ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम फॉर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड एस. एस का फॉर्मूला था PH3. मैंने आपको तकरीबन 11 डिफरेंट सब्सटेंसेस के स्ट्रक्चर बताया था, फॉर्मूला दिया था कि इनका स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करना है. इफ यू नोटिस फॉस्फोरस इज इन ग्रुप 5. ग्रुप 5 का एक और है जिसका हमने स्ट्रक्चर बनाया था, NH3. बिल्कुल वैसा ही इसका भी स्ट्रक्चर होगा. So how will we do it? सबसे पहले हमें देखना है what will be in the center. So phosphorus needs 3 electrons, so it will be in the center. हाइड्रोजन को एक चाहिए, phosphorus को 3 चाहिए, वो ज्यादा चाहिए उसको, वो सेंटर में चल जाएगा. Then we have 3 hydrogen on the sides. Don't spend too much time on drawing good circles. The goal is to get the question over with and to show कि bonded electrons कहाँ हैं और lone pairs कहाँ हैं. So 1 1 1 3 share हो गए. And now it has 2 left over, और वो यहाँ पे होगा. Remember, this is called bond pair. This is called lone pair. Okay. This question is from another chapter that we did. ये हमने Tuesday वाली क्लास में जो पढ़ा था. This is on that. So make sure कि आप इसको attempt कर लीजिएगा बाद में. Okay. Zinc bromide and zinc carbonate are both ionic compounds. Predict 2 physical properties. Again, वही 5 properties हैं. Other than electrical conductivity of zinc bromide. So electrical conductivity वाली 2 तो उसने वहीं पे हमें खत्म कर दी है. नाम solid की बात करेंगे, नाम liquid की बात करेंगे या aqueous की. अब हमें बताना है कि उसका melting point या density कैसी है. हमें बताना है कि वो soft है, hard है, ductile है, malleable है. हमें बताना है कि वो water में ज़्यादा dissolve होंगे या alcohol में ज़्यादा dissolve होंगे. तो यहाँ पे हम उन्हीं की बात कर लेंगे. So we'll say that it is hard, or it is more soluble in water than organic solvents. So that's the kind of answer we can give here. Zinc reacts with bromine to make zinc bromide. Okay. Zinc bromide contains zinc ions and bromide ions. Explain in terms of movement of electrons. Pay very close attention to this. उसने आपको खुद बता दिया कि उसे क्या चाहिए. How ZnBr2 is formed from zinc atoms and bromine molecules. So let's get started. Let's start from zinc atoms. उसने कहा है, तुम कहेंगे zinc atoms lose 2 electrons each. हर चीज उसने आपको क्वेश्चन में दे दी है. Each atom in bromine gains 1 electron. कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ रट्टे लगाने की जरूरत नहीं, सब दे दिया उसने. You just need to be able to understand it. Okay. Aqueous zinc bromide reacts with magnesium ash. Whenever you have an equation like this, what I usually do is कि मैं उसके ऊपर बाकी charges भी लिख लेता हूँ. बाद में useful रहता है वो.
Use the equation to explain that oxidation takes place. Let's see. Oxidation is when the number increases, or when electrons are lost, or when oxygen is gained. Oxygen तो यहाँ पे है नहीं, तो number increase करें. Magnesium goes from 0 to 2 plus. That anything that is higher in the reactivity series can give electrons. Anything that's low in the reactivity series can accept electrons. Oxidation वाली series की बात करो, metals वाली series की बात करो. So zinc नीचे है, magnesium ऊपर है. Magnesium lose करेगा, zinc gain करेगा. So we'll say that magnesium atom. You have to write Mg. अगर आप Mg2 plus लिख देंगे गलत हो जाएगा. मैग्नीशियम एटम नहीं तो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स. और देखिए उसने बोला एक्सप्लेन. एक्सप्लेन का मतलब समझते हैं आप कि आपने एक्चुअल रीजन पे जाना है. यूज द इक्वेशन टू एक्सप्लेन दैट रिडक्शन टेक्स प्लेस. सो अगेन दिस थिंग इज बीइंग रिड्यूस्ड, नॉट दिस. ये तो फाइनल आंसर है. सो विल से जिंक आयंस. या आप Zn2 प्लस लिखेंगे या आप लिखेंगे जिंक आयन. डू नॉट से जिंक ओनली और डू नॉट से जिंक एटम्स, क्योंकि वो तो है ही नहीं, वो तो बन रहा है एंड पे. gains 2 electrons, and that's how we know कि ये हुआ है. Okay, last question. Lead is a metal with proton number 82. Use the periodic table to state the number of occupied electron shells in an atom of lead. Now just because they've given us proton number does not mean कि आप इसकी electronic configuration करना शुरू कर दो, because all that we have studied, it does not work after element number 20. 20 से ऊपर, कैल्शियम से ऊपर ऑक्टेट रूल नहीं अप्लाई होता. सो इस वजह से हमने उसको नहीं यूज करना. वी जस्ट हैव टू लुक इन द स्ट्रक्चर ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड विल नो कि नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन शेल्स का मतलब क्या है. वो उसकी पीरियड पूछ रहा है, वो उसकी रो पूछ रहा है. सो विल जस्ट डू दैट. लेड किस में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में? जी, लेड इज इन सिक्स्थ रो, सो विल से सिक्स्थ. Use the periodic table to state the number of electrons in the outer shell. ये पूरी बात की जगह हम कह सकते हैं कि वो ग्रुप नंबर पूछ रहा है, वो कॉलम पूछ रहा है. So it is group number 4, so 4. अच्छा, एक और बात. ये जो वर्ड है ना स्टेट, इसका मतलब है कि डायरेक्ट आंसर लिखो. वन लेटर भी चलेगा, वन वर्ड भी चलेगा, 2-3 लफ्ज भी चलेंगे अगर आंसर पूरा समझ आ रहा है. स्टेट का ही मतलब होता है. डिस्क्राइब का मतलब होता है कि डिटेल में बताओ. एक्सप्लेन का मतलब होता है रीजन भी दो. दीज आर कॉल्ड कमांड वर्ड्स. इफ यू गो इन योर सिलेबस, बिल्कुल एंड पे कमांड वर्ड्स की लिस्ट होती है बिफोर द पीरियोडिक टेबल. उसको एक दफा जरूर देख लेना. ऑलराइट, डिस्क्राइब विद द एड ऑफ अ लेबल डायग्राम. डायग्राम बतानी जरूरी हो गई है. द मेटेलिक बॉन्डिंग इन लेड. अब वो लेड की जगह सिल्वर बोल दे, वो लेड की जगह आयरन बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता. मेटेलिक बॉन्डिंग की तो एक ही डायग्राम है. We have to draw at least 3 layers. Minimum 3 जरूर बनानी, ज्यादा बना सकते हैं, minimum 3. And then go crazy with the electrons. Randomly arrange कर दें उनको. There shouldn't be any order there. And यहाँ पे key बना लें. Free electrons. And this is cation. And now let's describe it. So cations are in layers. ठीक है. There is a sea of free या mobile या delocalized electrons. लेकिन बॉन्डिंग की कहाँ बात हुई है? आपने तो स्ट्रक्चर बताया, बॉन्डिंग की तो बात ही नहीं की. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बताया ही नहीं. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग्स. पॉजिटिव चीज क्या है? कैटाइन. नेगेटिव चीज क्या है? इलेक्ट्रॉन. सो देयर इज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटाइन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. और ये आपकी मेटेलिक बॉन्डिंग होती है. और इसी वजह से जो पहला सवाल किया था ना हमने एल्यूमिनियम वाला, इसी वजह से एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है मैग्नीशियम से, बिकॉज एल्यूमिनियम हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव एंड मैग्नीशियम हैज जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव. गिव 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लेड दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल मेटल्स. ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इसका मतलब है हम मेल्टिंग पॉइंट की बात नहीं कर सकते, बिकॉज ग्रुप 1 जो है उसका लो है, बाकियों का ज्यादा होता है. वी कांट डिस्कस दैट. What we can discuss is that all metals are soft, ductile,
But again, group 1 जो है ना वो ductile इतना ज़्यादा नहीं होता, soft होता है. We can say that all metals conduct electricity. That is true for all metals. So we can mention that. And that brings us to the end of today's lesson. All right. So I'll see you tomorrow, inshallah.